फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of Cricket मतलब Cricket Next and we are live। दोस्तों, भारत एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, होना भी चाहिए था। We should have expected यशस्वी भव हम कह रहे हैं because on debut on the cusp of scoring 157 short of 150 at 143 is Yashasvi Jaiswal, 2 centurions already. Captain Rohit Sharma helping himself to his 10th test century. Is all going well or do you have all is not well? Let's ask our cricket crazy friends. Here's a quick check of the scorecard, ladies and gentlemen. Yashasvi Jaiswal batting at 143, Rohit Sharma out for 103, Shubman Gill comes down at number 3 and things are not going. Ye teen ki panauti hai, or is it too early to decide? We'll have to wait and watch. And of course, Kohli currently batting at 36. Let's say hello to K. Srinivas Rao, Chetan Narula. चेतन नरूला, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, खुश हो कि नहीं? 2.76 का रन रेट, 312 पे 2, पता नहीं कितने साल बाद हमारे टॉप 4 बैट्समैन ने 300 रन बनाए। टॉप 4 ने तो नहीं बनाए, टॉप 2 ने बनाए हैं। टॉप 4 में से चौथा तो आज बैटिंग कर रहा है। टॉप 4 में से नंबर 3 जो है वो तो he couldn't do much. Look, it's been great watching Yashasvi. The kind of patience जो उन्होंने दिखाई है, patience is the key for me. I'm not going to judge him too much on anything, to be honest, because of the kind of pedestrian West Indies attack. I don't mean any disrespect, लेकिन जो सच है वो सच है. It's a pedestrian attack. The pitch is not the easiest to bat on. The ball is stopping a bit. It's turning. It's spitting. और सबसे बड़ी ट्रिक जो वेस्ट इंडीज ने खेली कि भैया उन्होंने नई बॉल लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम तो पुरानी बॉल से ही खेलते रहेंगे, आपको रन बनाना है बनाओ, नहीं बनाना बनाओ, हम तो मैच जीत नहीं सकते हैं तो हम तो पुरानी बॉल से ही करेंगे। एंड दे, आई मीन, इट्स जब स्पेशली द कुकाबुरा और द ड्यूक्स, आई एम श्योर, आई थिंक दे आर यूजिंग द कुकाबुरा, आई एम नॉट श्योर, बट इफ ईदर ऑफ द वे, जब वो बॉल सॉफ्ट हो जाता है, जब वो 80 ओवर से ऊपर हो जाता है, इट्स 80 भी क्या, 60 ओवर्स में बॉल सॉफ्ट हो जाता है। सो it's really tough to score, and West Indies found a way कि हम नहीं score करने देंगे आपको freely. But having said that, the kind of patience Yashasvi showed, that has been the standout thing for me. There are sterner tests, और जब मैं sterner tests की बात करूं तो अभी 10 मिनट पहले ही इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका की डेट्स आ गई हैं. We are playing the Boxing Day and the New Year's test there. So it's going to be amazing. What do I say? Those are going to be the sterner tests. टिकट कटा लो, दक्षिण अफ्रीका का टिकट कटा लो। But for now, यहाँ ठंड होगी, वहाँ गर्म होगा। बिल्कुल नहीं, but for now, it is what it is, and I think it's great. जो उनको करने को बोला गया उन्होंने करके दिखा दिया, उससे एक्स्ट्रा ही कर दिखाया। मैं चाहूंगा कि आज डबल 100 लगाए और just ताकि उनको इतनी लंबी रोप मिल जाए कि कोई कुछ उखाड़ ना पाए यशस्वी। And not just that, the fact of the matter, Shrini, is that everybody thinks that West Indies there. What's the big point is you've got to get in there. You've got to dig your heels in. You've got to score those runs. You've got to show that kind of temperament. You've got to show the ability to score runs and also the ability to wait it out, to stand there. 350 गेंदे खेलकर खड़े रहना, it's not easy. And there is some aji-baji also which has happened. Him trying to see force lunch early and the umpire saying idhar udhar dekhne se kuch nahi milega, continue to play, we're going to play 1 over more, whatever it is. So there is some fun that's happening, but amidst all of that, there's also a display of quality. If this guy can score like he did, as fast as he did in T20s, somebody was mentioned at the IPL, somebody was mentioning that in the Tulip Trophy, Ranji Trophy, he sat there, he scored 5 runs or 70 balls. So he's shown that he's got the ability to saddle multiple formats of the game. Yes, Shini. See, he's gone there from after, the kind of success that he saw in IPL this year. All the cameras on him, post-match presentations, he's everywhere. The headlines, underlights, on television, prime time. Now, he's gone to a country which is exactly the opposite of Indian prime time, right? Wherever, at the time that he's batting, chances are there is like hardly anybody in India watching him, okay? Now, that aside, he's facing, as Chetan said, the bowling, no disrespect, pedestrian, right? To add to that, the conditions extremely slow. The ball is just not coming onto the bat. It's like
It's like a pain to actually stand there and play. And in that, you have to put your head, and hardly any spectators in the stand. डोमिनिका में मतलब अगर पूरा डोमिनिका के लोग आके भी ग्राउंड भर देगा तो वो ग्राउंड नहीं भरेगा, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? In that, this boy has to stand there, put his foot down, not lose focus, not lose attention, watch ball after ball, however pedestrian it is, yet know that he's got a job to do. And that is what he needs to prepare himself for. Everything else will naturally come to him. The IPL, the glamour, the glitz, the lights, the attention, the prime time, everything will come to him. The package, you know. This is what Yashasvi needs to prepare for himself. So on that front, there are quite a few positives for him to pick at. And by the way, I think by the time the India innings is done, I think that Joshua Da Silva will also bowl a couple of overs. Not डाल चुके हैं 17 वो उस पे आ रहे थे 17 प्लेयर्स की लिस्ट, वो भी खेल लेंगे। ये 17 प्लेयर्स की लिस्ट है. इन 17 प्लेयर्स का एक एलीट लिस्ट. नाउ ही इज पार्ट ऑफ दैट एलीट लिस्ट. ही शेयर्स अ टेस्ट सेंचुरी ऑन डेब्यू विद द लाइक्स ऑफ सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रोहित शर्मा, हु वाज हिज बैटिंग पार्टनर. ही सेड रोहित शर्मा अपने माजी को याद कर रहे होंगे, 10 साल पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही खेला था. So that was in November 2013, if I remember that number. Chaitanya Nanda is also with us. Yes. So Chetan Narula, आपको लगता है 11 के 11 बॉलिंग करेंगे? वो तो विकेट कीपर भी कहेगा कैप्टन से, भाई कैप्टन तू कर ले कीपिंग, मैं भी थोड़ी बॉलिंग कर लेता हूँ. मेरे ख्याल से तो आज बेंच से भी बॉलिंग कराना पड़ेगा. But jokes aside, I think I mean they picked a team like that, right? They picked a team where almost everybody can bowl. Kind of bowling वो आप छोड़ दो, quality of bowling वो आप छोड़ दो, but they picked a team where everybody can bowl. I think they've done decently well in that sense, to with the old ball to keep the scoring rate low, given the pitch, which is not the easiest to bat on. But it's India's test match. और कल मैं commentary पे सुन रहा था, हिंदी commentary पे, कि क्यों ऐसे कर रहे हो, 4 दिन में हारोगे, 3 दिन में हार जाओ. That's not how they'll play. West Indies, उनको पता है वो हारेंगे. But उनको कोई जल्दी थोड़े हारने की, which was very absurd. उनको कौन सा इंडिया आना है वर्ल्ड कप खेलने? Exactly. मैं कहने का मतलब ये है कि and this is an ex-cricketer who was saying this. I'm not going to take anybody's names, but it was really weird to hear that. Really weird to hear that. But ठीक है, to each his own. Value of Yashasvi's double century against a weak team. Vineet Kulkarni. His real test is against South Africa, New Zealand and Australia. अरे विनीत कुलकर्णी, भाई एक बात समझो भाई, रोहित शर्मा तो 103 बना के आउट हो गया. हाँ, शुभमन गिल तो 11 में आउट हो गया. विराट कोहली कितना बनाएंगे? 6 पे आउट हो गया. सॉरी, मैं उसको 5 रन ज्यादा दे दी. मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस टीम के खिलाफ भी आपको रन बनाने की जरूरत तो है ना, काबिलियत होनी चाहिए. यू हैव टू मेक, चाहे टीम खसी हो चाहे ना हो, बट यू गॉट टू स्टैंड देयर एंड यू गॉट टू डिलीवर. 350 गेंदें खेली हैं. चैतन्य नंदा, आप क्या कहेंगे? आप यशस्वी को नंबर देना चाहेंगे, थम्स अप देना चाहेंगे? आपको लगता है कि बहुत स्लो खेल रही है भारतीय टीम? नहीं, I think first of all we should congratulate Yashasvi on scoring a century on his debut, which is a very big landmark. तो I think but Yashasvi से हम ना, देखिए, सो ही होता है, चाहे आप किसी भी टीम के अगेंस्ट बनाएं और कैसे भी बनाएं. So we cannot take it away. और secondly, the best thing is he's not throwing the wicket. He understands the value of the wicket. उसको समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉलिंग अटैक दोबारा शायद नहीं मिलेगा आने वाली सीरीज के अंदर. तो क्यों ना, जब मुझे ऐसा बॉलिंग अटैक मिला है, तो why not I should have a full use of it. मैं उसको, मतलब एज ए अच्छे क्रिकेटर की पहचान ये होती है, जहां आपको मौका लगा ना, तो आप उसको अच्छे से जितना आप उसका यूज कर सकते हो आप कर लो. और वही यशस्वी यहाँ पे कर रहा है. आई हैव सीन, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो यशस्वी ने 1-2 शॉट्स मारे जिसमें ही वाज लाइक he played a rash shot, but he realized it suddenly after playing a shot. He was like he went to विराट कोहली, उससे उसने बात करी, थोड़ा अपने आप को काम डाउन किया, रिलैक्स किया, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि जितनी लंबी इनिंग खेल सकता है, अगर वो 200 स्कोर कर सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, because these runs will come in use when he will not be able to score runs. क्योंकि क्रिकेट में ऐसा टाइम आएगा जब आपका बैड पैच भी आएगा और आप शायद रन ना बना पा रहे हो, बट उसी टाइम पे वो टीम मैनेजमेंट ये देखती है कि ये प्लेयर वो प्लेयर है जिसको मौका मिलता है तो वो अपनी विकेट को थ्रो नहीं करता. तो देन दैट टीम बैक्स यू अप, द मैनेजमेंट स्टार्ट बैकिंग यू अप.
सो आई थिंक यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा यूज किया है इस इनिंग का और अभी भी कर रहे हैं और आई थिंक आई विश हिम दैट ही स्कोर्स अ डबल 100 बिकॉज अभी मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह की बॉलिंग वेस्ट इंडीज कर रही है it will be a bad shot he will play or some bad some outstanding ball और विकेट के कारण कोई बॉल ऐसा गिर जाए जिसके कारण वो आउट हो जाए अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडियंस बॉलिंग अटैक इज लुकिंग लाइक दैट it's gonna take a wicket on its own. Yeah, but they're not going to take a wicket on its own. But what is India's intent here? ये यशस्वी जायसवाल का कहना it is very emotional for me and my family. I want to dedicate this to my mother and father. They have contributed a lot. Thanks to God. I won't say much now. I'm happy. This is just a start. I have a lot to do. बढ़िया है ये एटीट्यूड ऐसा ही रहे 2 5 10 15 20 40 35 सेंचुरी के बाद भी अगर यही एटीट्यूड रहेगा तो बहुत लंबा आगे जाएंगे पहले जैसे ही अगर डबल सेंचुरी मार दी और उसके बाद अगले टेस्ट से पहले अगर एटीट्यूड घूम गया दिमाग घूम गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी so that's another aspect no that fame the attention that it comes but if he's been able to manage the attention despite the IPL and all the hype there you think he's got it in him he's got the substance in him Chetan the other thing Rohit Sharma he gets to 100 and the manner in which he got out चैतन्य और Chetan जहां तक यशस्वी की बात करें I'm very very impressed there's no doubt about it I was impressed when he was playing in the IPL last year not even this year this year the way he batted in the IPL it was clear to me especially after he batted in domestic cricket जिस तरीके से उन्होंने domestic cricket में runs बनाए हैं उसके बाद मुझे ये लगा कि I think he can be an all format player because the major thing that I took away from the IPL for Yashasvi was that he was learning from the best there is and Josh Butler is one of the best white ball batsmen in the world at present इस साल उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए IPL में it does not matter but जो है सो है Josh Butler की जो capability है जो ability है and the kind of experience he was imparting to Yashasvi you could see Yashasvi was batting the way Josh bats and that was a major difference from last year to this year so इट्स अबाउट लर्निंग हमने अभी एक पीछे कमेंट देखा somebody was saying कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बनाए हैं उसकी क्या वैल्यू है आप एक मिनट के लिए भूल जाओ कि आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बना रहे हो यू हैव टू दिस इज अ गाय देखो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके रन्स मैटर नहीं करते हैं दे मैटर यार दे मैटर you put yourself in his shoes you're playing your first test on the international stage पूरी दुनिया आपको देख रही है पूरा इंडिया आपको रात को जाग कर देख रहा है that adds a lot of pressure playing for India is a huge pressure it's like जिस दिन आप मतलब विनीत ने ये पूछा था जिस दिन आप एक नई जॉब के लिए जाओगे उस दिन it does not matter that whether you're working with Ambani or whether you're working at the roadside tea stall hopefully Vineet is not working at the roadside tea stall but I'm just saying कि आप अपने बॉस को इंप्रेस करना चाहोगे ना you will be nervous what you're trying to do in life and this guy has come from a very humble background and now there are billion people watching him and the thing is आज की डेट में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बनाया है उसका रियल टेस्ट तब आएगा तब वैल्यू होगी बॉस अगर वो फेल हो जाता कल को आप ही कहते ये तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फेल हो गया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या खेलेगा सो एटलीस्ट नाउ वी कैन ओनली से आप अपना ओपोनेंट चूज नहीं कर सकते हो आप कंडीशंस चूज नहीं कर सकते हो यू कैन ओनली परफॉर्म अगेंस्ट व्हाट यू हैव बीन गिवन एंड फ्रॉम दैट मैनर आई थिंक यशस्वी हैज डन रियली वेल yes we cannot judge him but he's shown the temperament he's shown what he's made of जहां तक रोहित शर्मा की बात है again we've had so much discussion ki whether he should be playing whether he should be playing what is the future here and there the only thing we could ask from him was that you go there you make it count and he made it count he got that 100 under his belt I still believe Rohit the test opener is very very valuable for India he should not be captain but that is a very very debate Yeah, that's an open debate. But I'm just saying, this guy Alec Athanaze, when he comes out to bowl, not very impressive, but gets both the wickets, and quite a bit of drama around Rohit Sharma's dismissal also caught right next to his heel, and some this one. I'm just wondering, was it required? Could Rohit have gone on to play a far bigger innings and perhaps not just get some runs under his belt, but somewhere totally not just be satisfied with 100. Somewhere did you feel that he let his guard down at that 100? What is going on in their mindset? Did you also get the sense, Chaitanya, that they're perhaps playing far slower than what they should? The other thing is, what beats me is the West Indians' refusal to get a new ball. Why is they doing that? What logic hai?
Actually, that I also don't understand because I think थोड़ा उनको लग रहा है कि विकेट पे स्पिनर्स को हेल्प करेगा, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड विकेट स्लो है, और अगर नया बॉल होगा तो उसका सीम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बाउंस मिलेगा, बॉल ऊपर नीचे रहना शुरू हो जाएगा। हमने देखा है थोड़ी बॉल्स पे रह रहा है, बट वो विकेट के अंदर नहीं रह रहा, इट इज आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप फॉर यशस्वी और लेग स्टंप ऑफ द राइट हैंडर। तो मतलब विकेट के अंदर नहीं हो रही वो चीज़, इसलिए दे आर इंडियंस आर इजीली बैटिंग। बट नया बॉल लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज नए बॉल में हार्डनेस होगी, विकेट किस तरीके से बिहेव करेगा नई बॉल से, दैट विल बी अ डिफरेंट वे। तो और दूसरी बात, जैसे आपने कहा रोहित शर्मा की, see you have achieved so much, that what you see in last few innings of Rohit Sharma, whenever he score runs or score 100, he just go and try to hit every ball out of the park। वहां पे दिखता है कि कहीं ना कहीं वो हंगरनेस, वो अप्रोच कहीं ना कहीं वो मिसिंग है जो पहले वाले रोहित में थी जब वो टेस्ट क्रिकेट में आए थे। दूसरी चीज, अगर आप यशस्वी की बात करते हैं तो यशस्वी का अगर आप फर्स्ट क्लास करियर देखेंगे तो उन्होंने 250s बनाए हैं और 900s बनाए हैं, तो उनको एक हैबिट है लंबी इनिंग खेलने की। ही हैज दिस हैबिट, और ये हैबिट होती है आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। सो यशस्वी के पास ये हैबिट है, वेन एवर ही गेट्स इट ही वांट्स टू मेक इट बिग, और ये अच्छी चीज है। और जैसे आपने बोला, ही हैज टू कीप इट दिस वे ओनली। ऐसा ना हो कि दो तीन इस सीरीज के अंदर वो 300 350 रन बना दें, मतलब एक डबल 100 इधर बना दें, 100 अगले में बना दें, अगर भगवान करे, तो कहीं वो हंगरनेस कम दिखाई देनी शुरू ना हो आगे जाके। सो यू हैव टू हैव दिस हैबिट ऑफ बैटिंग लॉन्ग। इफ यू हैव दैट एंड यू कैन सस्टेन विद दैट, देन ऑब्वियसली यू कैन स्कोर लॉट ऑफ रन्स, बिकॉज जब आप 100 स्कोर करते हैं ना, तो एक तरीके से माइंड ना एकदम से रिलैक्स हो जाता है। करेक्ट। सो 5-10 मिनट होते हैं ना, वो बॉलर के लिए एक बड़ा अच्छा विंडो होता है विकेट लेने का, क्योंकि बैट्समैन ने कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन अचीव कर लिया होता है और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो बॉलर कहीं ना कहीं वहां उससे गलती करवा सकता है। बट एक बैट्समैन जिसके लिए वो माइलस्टोन माइलस्टोन नहीं है, बिकॉज ही हैज दिस हैबिट ऑफ स्कोरिंग बिग, नॉट थ्रोइंग हिज विकेट अवे, वो रिलैक्स फील नहीं करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल प्लेयर एंड अ लेजेंड। So if you want to become a legend, you have to have this habit of not relaxing when you achieve some milestone, because cricket के अंदर 50 भी एक milestone है, 100 भी एक milestone है, 150 एक milestone है। So you see lot of players, those who score these kind of runs, they get out after 5-10 runs। कोई 100 बना के 105 वो आउट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो milestone मिल जाता है, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, आई हैव अचीव्ड इट। सो ही टेक सम टाइम टू कम बैक टू थिंक, नहीं अब मेरे को 150 के माइलस्टोन पे जाना है या मुझे 200 के माइलस्टोन पे जाना है। तो कहीं ना कहीं वो एक गलती कंसंट्रेशन में लैक होता है, और वहां पे बॉलर के लिए एक अच्छा विंडो होता है। बट आई थिंक ये वेस्ट इंडीज जो साइड है ना, इनके पास इतना थॉट प्रोसेस है नहीं, मतलब ये इतना सोचने वाले हैं नहीं, और ना ही इस विंडो को यूज करने वाला स्किल है उनके पास, जिस तरह की अभी वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगर एक टीम 8 बॉलर के साथ इस प्लानिंग से उतर रही है टेस्ट मैच में कि वो 8 बॉलर यूज करेगी, तो आई थिंक वो पहले ही टेस्ट मैच वहीं पे हार गए। और वेस्ट इंडीज तो मेरे को लगता है टेस्ट मैच पहले इसलिए हार गई क्योंकि उन्होंने स्पिन की विकेट बनाई है। क्यों बनाई है स्पिन की विकेट, मेरे को कोई उनसे पूछे। आपके पास क्या अश्विन और जडेजा से बेटर बेटर स्पिनर्स हैं? Still in fast bowling you have a better bowling fast bowlers, with you have better fast bowlers than India right now। इंडिया के पास मोहम्मद सिराज को छोड़ के बाकी सारे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स नहीं है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेला है। बट आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 145 सुपर फेंकते हैं, और हमने देखा है स्पीड मैटर्स व्हेन यू गो टू वेस्ट इंडीज। बाउंसर्स और ये सब चीजें एक माइंडसेट है, तो मुझे लगता नहीं है मतलब क्या बट सोच है। आई डोंट नो कि वेस्ट इंडीज एवर मेक्स दोस पिचेस। अब मुझे लग रहा है 2007 का जो वर्ल्ड कप था उस वक्त हमने देखे थे किस तरह के पिचेस बने थे। वो पिचेस ऐसी थी, उसके बाद भी जब भी वेस्ट इंडीज गए ऐसे नहीं गए कि वी सीन दोस ट्रेडिशनल पुराने ग्रीन टॉप्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये कह रहे हैं, रविशंकर कुमार कह रहे हैं, यस्टरडे बॉल वाज टर्निंग ऑन 5.5 डिग्री, स्कोरिंग रन्स ऑन दिस पिच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बैट, गिविंग लेक्चर इज वेरी इजी, पिच इज वेरी वेरी स्लो। ओह, रविशंकर कुमार कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली का 36 ऑफ 96 इज अ वेरी वेरी पेशेंट इनिंग्स। के श्रीनिवास राव, डू यू वांट टू एग्री विद रविशंकर और डिसएग्री? But before I get to what Ravi Shankar is saying, I'll get to that word Chaitanya used की pitch जो बनाई है is the catch word। like pitch बनाई है, वो जो मैंने on the morning of the game जब मैंने pitch का image देखा, मुझे तो लगा कि साफ किया और बोला चलो यहाँ खेल लेते हैं। it looked like a Kanga League wicket to me। आजाद मैदान में जो Kanga League का wicket होता है वो वैसा था। तो a brown patch in the middle of green। I don't think we are looking at this series. Forget this test match. To answer Ravi Shankar's statement,
exactly 12 years ago. It is this very country and a series where Mr. Virat Kohli had made his test debut. The first test match was in Sabina Park in Jamaica, right? यहाँ से उनकी- Now, I had covered that series, so I distinctly remember the Virat Kohli that I, kind of had started tracking. Uh, I remember, Anand, I'll just share a small anecdote. I remember in Sabina Park and in Barbados, actually, in leading to the series, the white ball tournament was before the red ball series. And in the run up to the test series, I remember I landed in Barbados that night, and I like kind of checked into my hotel, and I said, where is a place to go and eat dinner? So they pointed me out, and they said it was very late in the night, 10:30, 11. They said, walk up this street, and it's a party night, so everything will be open. You can go and eat wherever you want. And I started walking. It was 11:30. I remember everything was shut. I said, I was told that everything is going to be open here. So the guy said, no, wait, it'll open now. That's the kind of Barbados night. So that night, the one guy who I saw ready to party was the World Cup winning Virat Kohli, right? At that time, if I were to look at Virat Kohli on that 2011 tour of West Indies, and if somebody were to tell me that by 2014 this is the product I would be looking at, trust me, I would not have believed. I would have had to see it. Now bring that cut to Yashasvi Jaiswal today. This boy looks like he's already kind of, where he's coming from is nowhere where Virat Kohli was coming from. Virat Kohli was like, in 2011 was the ultimate party boy who had arrived in life by the time India had gone to West Indies. And much in Yeah. contrast to what the Yashasvi, the product that we are looking at, is a far more disciplined product. And in 3 to 4 years from now, sky is the limit where this boy can take the level of confidence that he's building for himself. And the kind of I just see this boy like kind of taking he's just arriving on the runway. It's like a flight that is arriving on the runway. It is just about reaching there, and once it takes off, I see this boy ruling world cricket. He and Shubman, ruling world cricket for the kind of talent that they carry. So I was looking at it from the fact that if you are in such a position, पुजारा के लिए भी पुजारा भी like मुझे इंटेंट का बोल के निकाल दिया और यहाँ खुद 2.5 के रन रेट से खेल रहे हैं लेकिन ओह कुलदीप शोरन क्या Good one. बात है really good one really बोल के but I was just thinking बॉस 150 रन थे ठीक है वेस्ट इंडीज ने बनाया है आपके कैप्टन हमारा कैप्टन कहता है कि मुझे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है क्या ये एग्रेसिव क्रिकेट हम देख रहे हैं या फिर जो वो कह रहा है उसका बिल्कुल विपरीत ही एक्सपेक्ट किया जाए चैतन्य आपसे पूछता हूं देन विल टेक दिस टू चेतन एंड के सर I'm just asking see I day think 3 play is about to get underway I'm just saying everything that Rohit Sharma is saying and what's happening is total opposite तो क्या ये मान के चला जाए रोहित सिर्फ मुझे लग रहा है अपनी बात कर रहे हैं, सिर्फ वो खुद एग्रेसिव माइंडसेट पे हैं और एग्रेसिव बैटिंग करना चाह रहे हैं। बाकी जो आसपास हो रहा है उधर कुछ एग्रेसिव दिख नहीं रहा है मुझे। टीम सिलेक्शन में भी एग्रेसिव नहीं दिख रहा है और वो होना भी मुश्किल है। जैसे आपने बोला था ना, छोड़ दो मुझे लास्ट 2-3 एपिसोड पहले, ये वही वाली स्टोरी है कि बट यहाँ पे जो बात है एग्रेसिव की ना कि यहाँ पे जो इंटेंट दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ विकेट है। विकेट पे इस विकेट पे ना रन बनाने बड़े मुश्किल है बिकॉज विकेट स्लो है, घूम रहा है, ऊपर नीचे रह रहा है। तो आई थिंक द स्पीड ऑफ द स्कोर रन्स दे आर स्कोरिंग ऑन द रन रेट, मुझे लगता है ठीक है, वो खराब नहीं है बिकॉज ये विकेट इतनी अच्छी है नहीं। आप देखिए ना जो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर उनको आप कहीं और खिलाएंगे, पाटे विकेट पे खिलाएंगे तो अभी तक 500-550 रन लग चुके होते। दे आर नॉट बॉलर्स, दे आर जस्ट पार्ट टाइम बॉलर्स। आई थिंक इंडिया में इनसे बेटर लेफ्ट आर्म आपको क्लब क्रिकेट में मिल जाएगा। वॉरिकन जो बॉल डाल रहा है एंड ही केप्ट ऑन बॉलिंग, मुझे लग नहीं रहा कुछ कर पाएगा। बॉल ना सीम पे है, ना बॉल में कोई तेज रोटेशन है स्पिनर के। अगर आप बॉल को ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं तो बॉल ऐसे करते हुए जा रहा है। ऐसा बॉल कैसे आउट करेगा किसी को, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना रोटेशन, ऐसे बॉल घूम ही नहीं रहा उसके अंदर कि वो बाइट करे, विकेट से कुछ निकल के जाए। I am telling you, this is the wicket where he is able to ball and he is able to stop Indian cricketers. Otherwise, अभी तक तो कुटाई बहुत लंबी हो चुकी होती है इनकी। तो आई थिंक अगर पुजारा बैटिंग करते इस विकेट पे, बोलना नहीं चाहिए, ही इज अ लेजेंड, ही हैज अचीव्ड अ लॉट उनके बराबर।
बट इस विकेट पे अगर पुजारा बैटिंग करते तो आई थिंक उनकी रन रेट इसमें स्ट्राइक रेट 1 की होती, 1 सवा 1 की होती, इससे ज्यादा नहीं होती. But Pujara is one of the better players against spin. His footwork is perhaps one of the best. And Pujara, यहाँ पे जय कृष्ण कह रहे हैं अच्छा हुआ भाई, Pujara's exclusion is good for India. Yesterday he played very defensive for West Zone, and because of that other batsmen got under pressure and got out. ये वेस्ट जोन की कहानी कह रहे हैं हमारे. इससे पहले एक और कमेंट आया था, उनका ये कहना है कि यार स्पिनर्स के खिलाफ, इससे पहले वाला, हाँ, इंडियंस आर द बेस्ट प्लेयर टू स्पिन राइट. व्हाट हैपेंड टू द स्कोरिंग रेट एंड रोहित शर्मा's aggressive mindset? साई कुमार, जो सवाल आप पूछ रहे हो वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ. यस चेतन. नहीं देखिए, आई थिंक वी आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स. वी आर कंफ्यूजिंग कि aggressive play with aggressive mindset. Aggressive mindset is always about looking for runs. And they were looking for runs. Let's not forget, it's not just about the pitch, how bad the pitch is. It's also about the fact कि आपकी बॉल स्लो हो गई है. मैंने पहले भी कहा है कि 60 ओवर के बाद बॉल इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उस पे मारना, ऐसी पिच पे रन कैसे मारोगे आप? तो यू आर सेइंग कि if somebody assumes कि जब वो न्यू बॉल ले ही नहीं रहे हैं, 80 ओवर के बाद भी वो न्यू बॉल नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी इतनी स्लो पिच पे करा रहे हैं, they are taking the pace off. Are you saying कि उस पे भी अटैक करो? That is why we are sitting here and these guys are commenting and they are playing cricket. ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आप जस्ट गो एंड जाके मारना शुरू कर दो, बेसबॉल खेलना शुरू कर दो. ऐसे नहीं होता है. देयर इज एन अटैकिंग माइंडसेट. व्हेन दे से कि वी आर गोइंग टू बी अग्रेसिव, इट मींस वी आर गोइंग टू प्ले और पिक प्लेयर्स हु आर गोइंग टू बी अग्रेसिव व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स. राइट नाउ द सिचुएशन इज कि वी आर सो मच अहेड, वी जस्ट नीड टू कीप ऑन बैटिंग और फिर उसके बाद उनको एक दिन के अंदर आउट कर देंगे. मोस्टली शायद 2 सेशन के अंदर आउट कर देंगे. सो the end goal right now is getting full points from this test series, and that's enough. And you are preparing your aggressive mindset. You're picking 5 bowlers. You're playing Shubman Gill at number 3. You have Yashasvi who can change gears when he wants. And Chaitanya is right कि अगर ये थोड़ा सा भी पाटा विकेट होता, थोड़ा सा भी बॉल हार्ड होता, तो they would have gone at a faster clip. Somebody like a Rohit is playing so slowly means the ball is not conducive. The conditions are not conducive. तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नहीं, एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ये है कि जब हम लोग उस पिच को देख रहे हैं तो उस पिच में वो बॉल घूम रही है, काफी घूम रही है, बट हम जिस बॉलिंग अटैक के खिलाफ हम जितना कॉशियसली खेल रहे हैं, हमको लगता है कि यार ये बॉल जितनी भी घुमा ले हम इनको और ज्यादा घुमा सकते हैं आउट ऑफ द पार्क. सो दैट्स वेयर द कॉन्वर्सेशन इज. आई एम वेरी हैप्पी दैट द इंडियंस आर प्लेइंग वेल. वी गॉट 2 फुल डेज ऑफ क्रिकेट. मुझे तो लगा ये 2.5 दिन में सिमट जाएगा, कम से कम तीसरा दिन भी तो खेलेंगे. ये कम से कम डे 4 तक तो जाता हुआ दिख रहा है. अब भरोसा नहीं, मे बी मैंने अतिशोक्ति होगी, मैंने पहले ही बोल दिया, आई हैव सेड टू फार बिकॉज़ दे मे जस्ट डिसाइड दैट वी विल बैट द फर्स्ट सेशन, देन वी विल डिक्लेयर, एंड देन पता लगा वेस्ट इंडीज शाम की चाय से पहले ही वापस पहुंच गई, भाई ये चाय नहीं, उसको हमको कुछ और चाहिए. सो आई डोंट नो व्हाई इंडियन यंग फास्ट बॉलर्स आर नॉट फास्ट ट्रैक लाइक यशस्वी. दैट इज जय कृष्णन्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन, पहले उनाटकर की पेंशन स्कीम तो खत्म कर लो, उसके बाद ही खिलाओगे ना. और वो यशस्वी जायसवाल को भी फास्ट ट्रैक इसीलिए किया क्योंकि केएल राहुल अभी इंजर्ड है, और उधर देखो ऋतुराज गायकवाड़ को फास्ट ट्रैक नहीं किया आपने, तो फिर पेंशन स्कीम आगे एक्सटेंड अजिंक्य रहाणे के लिए भी किया है. ऐसा मत कहिए, सिर्फ जयदेव उनादकर नहीं है. नहीं यार, वहां पे फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है. एंड अजिंक्य रहाणे, इट्स नॉट लाइक अजिंक्य रहाणे प्लेड अ टेस्ट मैच 12 years ago. It was just 1 year ago and he was dropped and he came back and he played well at the Oval. Let's not compare the two. I mean, these are not comparable cases. Come on. Okay, Srinivas Rao, where do you stand? What are you thinking right now? To me, this series is not about India versus West Indies. This test series now, the way I'm looking at. For me, this test series is now about what India wants to do. How does it want to prepare? What does Yashasvi want to take? What's a takeaway for Yashasvi here? I'm not even like, Ashwin can end up taking 3 more 5 wicket hauls. It doesn't matter to me. Against this West Indies series, I'm not even looking at anything. Ashwin को जहाँ खिलाना था वहाँ तो तुमने उसको खिलाया नहीं, तो उसको बाजू रखो. And I'm should say कि जहाँ खिलाना था वहाँ नहीं खिलाए, यहाँ तो मेरे को खिलाओ ही मत, मेरे को ही मत खिलाओ, खुद ही यहाँ खिलाओ. ठीक है, वो तो जब वो statistical highlights में चला जाएगा, another 2 5 wicket hauls. I want to see what kind of confidence does Yashasvi pick from this. मैं तो चाहता हूँ कि आज वो रहे 250-300 मारे आराम से, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इंटरनली, उनको अंदर से अच्छा लगने लगे कि scoring. So many batsmen I've heard it from, kind of who are professionals, and say, scoring runs it's like a habit that you get into. You need to be in the habit of scoring big, and that's how you आपने अगर आप रोज
आप रोज एक अच्छा एक डाइट लोगे तो आपको उस लेवल का एपेटाइट आपका बिल्ड होना शुरू होगा. सेम स्टैंड्स फॉर स्कोरिंग रन्स, पिकिंग विकेट्स. You need to develop an appetite for it, and I think a series like this, Yashasvi should use it to build that appetite. Virat Kohli should use this series to find that missing touch, to find, आपने कुछ नहीं करना. You have nothing to prove to anybody else in the world right now. There is a lovely series coming up at the end of the year, which was your last series as a test captain. You want to go there and prove a point, right? In 2018 you went there, things did not go the way you would have wanted. The next one, things didn't work out for you. You want to go and prove a point there, so use this and use the next 6 months to build it up, to build up mentally in terms of what kind of space you want to be in from a test. Other than that, I don't see any relevance from a सीरीज. तो फिर एक बात बताइए, 162 150 में तो आपने पहली बार इनको आउट किया, अभी 162 रन की लीड है. व्हाई कांट द टीम प्ले अ लिटिल बिट ऑफ एन एग्रेसिव क्रिकेट, लेट बैट्समैन गो फॉर द स्ट्रोक्स अ लिटिल, और आज इज एवरीबॉडी गोइंग टू वंडर. नो सॉरी सब लोग अपना 50-50 बना लें. No, You're expecting them to go fast. Today I'm expecting them to kind of, change gears Pick a up the bit. pace. See, the ball is not coming onto the bat. Please, I mean, यहाँ पे हम थोड़ा aggression बात करते हैं. You see the West Indies taking the new ball top of the day. Yeah, when I saw a meme on Twitter and I laughed my The guts new out. ball last night, यार. वो मैं last evening they did, right? Last 20 minutes से तो new ball. They took it. हाँ, वो नहीं एक मैंने मीम देखा ट्विटर पे जहाँ पे वो कॉर्नवॉल जो है अपने प्लेयर्स को कह रहा है, नहीं लूंगा विकेट, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लाइक काइंड ऑफ, मुझे नहीं लेनी है विकेट. दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट वो क्या सोच रहे हैं वो उन्हीं को पता है. बट दैट सेड, आई डोंट, चैतन्य सेड इट राइट. आपने क्या सोच के आपने काइंड ऑफ आपने ये इतने स्पिनर्स आप जो खिला रहे हो, आप क्या सोच के ये विकेट बनाए हो, फिर माइंड गोज बैक टू द ट्रैक कि बनाया है या मतलब गिरा पड़ा हुआ मिल गया उनको, लाइक काइंड ऑफ. चलिए जेंटलमैन, आज के खेल का, आज के दिन की शुरुआत होने वाली है. चलिए कल भी हम हंसते खेलते थोड़ा सा मस्ती करते हुए बात करते हैं कि नहीं. अब आप होपफुली यशस्वी जायसवाल 200 रन बना लेते हैं, विराट कोहली 100 बना लेते हैं, और फिर ये टेस्ट मैच चौथे दिन तक जाता भी है. पता लगा उससे पहले ही खत्म हो गया, कल हम किसी और चीज पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैच तो खत्म ही हो गया. वो भी हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. बट थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज ग्रेट फन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.